मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dears, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope all of you will be fine and enjoying your best in your life. Dears, we are making the today videos on time series analysis. MCQs part of B.L. Agrawal programmed statistics book of chapter number 16. But before of discussing the MCQs of that book, we want to say about time series analysis and explain the four components of time series analysis with you. So the first one is, what is time series analysis? The definition of time series analysis is this: a time series is a set of observations measured at time or space intervals arranged in chronological order. If you don't mind, I want to explain it in Urdu also, because most of the students understanding Urdu easily, so I want to explain it in Urdu. टाइम सीरीज़ क्या होता है? टाइम सीरीज़ का मतलब है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि हम मेजर करते हैं टाइम और या स्पेस के इंटरवल की साथ अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? तो हम एक टाइम या स्पेस के इंटरवल के साथ इसको क्रोनोलॉजिकल डेटा तो आप जानते होंगे, ठीक है, जैसे कि इस जगह की मुनासिबत से आती है, ठीक है, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द अर्ली डिमांड ऑफ कमोडिटी, वीकली प्राइसेस ऑफ एन आइटम एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज हम अर्ली डिमांड ऑफ कमोडिटी फाइंड करते हैं, तो एक जगह की फाइंड करेंगे, लेट सपोज पाकिस्तान में एक ख़ास जगह कराची लेट सपोज, या इंडिया में मुंबई का जो है उस जगह की हम कमोडिटी की जो डिमांड्स होते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है, अर्ली। या वीकली प्राइसेस जो है एक आइटम की चेक कर लेते हैं किसी ख़ास जगह में, लेट सपोज इन अमेरिका, इन पाकिस्तान, इन इंडिया एटसेट्रा। So that is called time series analysis. There are four components of time series. In time series data we have the four components. The first one is secular trend, second one is seasonal variation, third one is cyclic variation, and the fourth one is irregular or random variations. Okay, what is secular trend or secular variation? It is a long term moment. What is mean by long term moment? More than 1 year. Means after 1 year the variations coming is called secular trend. For example, population growth, sales of products, upgradation, etc. It may occur due to population growth. Secular trend का क्या मतलब है? Secular trend वो variations होते हैं, वो trends होते हैं जो आफ्टर 1 ईयर अकर होते हैं। मतलब इसमें कम से कम जो टाइम है वो 1 ईयर होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी भी है जो 1 ईयर से कम भी आ जाए, लेकिन सेकुलर ट्रेंड जो है ये मोस्टली 1 ईयर से ज़्यादा जो वक्फे में जो हमारे पास वेरिएशंस आते हैं उसके लिए हम सेकुलर ट्रेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो हम 5 साल आफ्टर या 10 साल आफ्टर जो है हम फाइंड करते हैं। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स की सेल जो है वो अगर मौजूदा सूरत हाल को ना देखें, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तो दिन ब दिन बढ़ती है, लेकिन मोस्टली जो है ये आफ्टर 1 ईयर जो है इसकी जो प्राइसेस है उसमें चेंजेस आते हैं। ज़्यादातर तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसी भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी जो प्राइसेस है वो डिक्रीज़ हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर जो है वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अपग्रेडेशन होते हैं वन स्केल से दूसरी स्केल में, ठीक है। इट में अगर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक। सेकुलर ट्रेंड जो है ये ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आते हैं, तो इसको कहते हैं सेकुलर ट्रेंड, और ये लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, ठीक है।
The second one is seasonal variations. These are short-term changes occurring in a time series data in periodic manner with shorter period of time such as monthly, quarterly, weekly, daily, early, etc. Example Grecian woolen cloths have market during winter season only. Ice cream and cold drinks are in great demand in summer, etc. Okay, so the seasonal variation are those variation which occur due to the season changing, ठीक है, और द क्लाइमेट चेंजिंग। ये वो वेरिएशन होते हैं जब आपका सीज़न चेंज हो रहा हो तो उसके साथ चेंजेस आते हैं, कपड़ों की चेंजेस भी हो सकते हैं। मतलब आप सर्दी में जो है गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ जो होते हैं वो पहनते हैं, और गर्मी में जो है आप कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसे कपड़े हो जो जिसमें हमारे पास मतलब इसमें गर्मी ना हो, मतलब वूलन कपड़े ना हो, ठीक है। जो ज़्यादातर जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी पलता कपड़े जो होते हैं। अच्छा, जैसे कि हम इसी तरह विंटर सीज़न में जो है हम आइसक्रीम यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास समर का सीज़न होता है उसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको सीजनल वेरिएशन कहते हैं। द थर्ड वन इज साइक्लिक वेरिएशन। एज यू नो फ्रॉम द नेम दैट्स दिस वन इज आल्सो अ लॉन्ग टर्म oscillation. Oscillation mean a moment which repeats itself but does not have a fixed value. What is mean by oscillation? Oscillation का मतलब ये है कि एक वो मोमेंट जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो लेकिन बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आज मतलब ये एक चीज़ जिस कीमत पर हो, जिस वैल्यू पर हो, तो वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसी पोजीशन पर आता है, लेकिन फिर भी वही वैल्यू होगी, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। वैल्यू में चेंजेस थोड़ी बहुत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिक वेरिएशन। अबाउट द ट्रेंड लाइन, सिंस द मोमेंट टेक form of upward and downward swings, therefore they are also called cycles or business cycles. इसको साइकिल्स और या बिजनेस साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ 4 फेज्ड। इसमें 4 फेज्ड होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बूम और प्रॉस्पेरिटी। पहले को बूम और या प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। द सेकंड वन इज़ डिक्लाइन और कंट्रैक्शन और रिसेशन। सेकंड वन जो होते हैं उसको डिक्लाइन, कंट्रैक्शन या रिसेशन भी कहते हैं। द थर्ड वन इज डिप्रेशन एंड द फोर्थ वन इज इम्प्रूवमेंट और रिकवरी विच फाइनली डेवलप्स इनटू अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चीज़ है वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है, इसी तरह। तो ये यहाँ से स्टार्ट है, पीस है ये, ठीक है, ये हमारे पास पीस है, ये जो फर्स्ट होता है इसको बूम और प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड जो आता है ये वाला जो वैल्यू आती है यहाँ, ठीक है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा होता है तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मतलब ये मिडिल वाली वैल्यू बनती है, इसको कंट्रैक्शन या रिसेशन कहते हैं या डिक्लाइन भी कहते हैं, जो मतलब ये डाउन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। जब ये लास्ट पोजीशन पर पहुंच होता है तो ये लास्ट पोजीशन जहाँ पर ये बिल्कुल डाउन होता है तो इसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, ये डिप्रेशन पे आ जाता है। जब ये दोबारा डिप्रेशन से ऊपर जाने लगता है, मतलब अपने आप को डेवलप करने लगता है, तो फिर इस जगह को हम रिकवरी कहते हैं क्योंकि ये रिकवरी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। जब दोबारा ऊपर पर पहुंचता है, मतलब पीस पर पहुंचता है, तो उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया कि बूम और प्रॉस्पेरिटी, तो इसको बूम और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पीस होता है इसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइक्लिक वेरिएशंस है। अच्छा, द फोर्थ वन इज इर्रेगुलर और रैंडम वेरिएशंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। The variation that occur due to certain chance events like earthquake, floods, strikes, famine, war, migrations, etc. And time series data is called irregular variation. Irregular variations are those variations that are occur due to earthquakes, जिसको हम जलजला कहते हैं, फ्लड्स, ठीक है, स्ट्राइक्स, फेमाइन, वार, जैसे कि आजकल जो यूक्रेन पर वार हो रहा है, ठीक है, माइग्रेशन की वजह से भी आ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन जो लोग करते हैं,
तो ये मुख्तलिफ हालात की वजह से आ सकते हैं। इसको इर्रेगुलर और रैंडम वेरिएशन कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसिस्टमेटिक इन नेचर। इसके लिए हमारे पास कोई सिस्टमेटिक नेचर नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे टाइम सीरीज़ डेटा की। अब आते हैं टाइम सीरीज़ की एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हमारे पास टाइम सीरीज़ का जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द फर्स्ट वन इज़ a time series is a set of data recorded periodically at time or space intervals at successive points of times, and D is all the above. So the D option is correct option because it can be recorded in periodically at time or space intervals or at successive points of time. Question number 2. The time series analysis helps to compare the 2 or more series. Yes. To know the behavior of business. Yes. To make predictions. Yes. And D option is all the above. So the D option is the correct option. Question number 3. A time series is unable to adjust the influences like customs and policies changes. Yes. Seasonal changes, no. Long-term influences, no. None of the above is no. So a time series is unable to adjust the influences like customs and policy changes. So option A is the correct option. Question number 4. A time series consists of 2 components, 3 components, 4 components. It has 4 components. Question number 5. The forecasts on the basis of a time series are 100% true, true to a great extent, never true, and option D is none of the above. So it's true to a great extent, not 100%. 100% means 100%. It's not 100% true, but it true at a great extent. Okay, so option B is the correct option. Question number 6. The component of a time series attached to long-term variations is termed as a cyclic variation, secular trend, irregular variations, all the above. So it is a secular trend. The first one is long-term variation, which is secular trend. Question number 7. The component of a time series which is attached to short-term fluctuations is a seasonal variation, cyclic variations, irregular variations, all the above. All the above is the correct option because the secular trend must be a long-term variation that is more than 1 year, and the seasonal variations are coming in 1 year. Cyclic variation may become in 1 year, okay, and irregular variations may become in 1 year, in 1 month, in 1 week also, because irregular variation जो है ये हमारे पास हफ्ता बाद भी आ सकता है। मतलब आज जो है हमारे पास एक ज़िलज़ला हो गया, हफ्ता बाद भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह साइक्लिक वेरिएशन जो है ये भी ज़रूरी नहीं कि ये बहुत लॉन्ग टर्म का हो, ठीक है। सो द डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8. अ लॉकआउट in a factory for a month is associated with the component of a time series irregular movement, secular trend, cyclic variations, and none of the above. So it is an irregular movement because what is meant by lockout? Lockout means मजदूरों का कारखाना बंद करना, ठीक है। वो कारखाना जिसमें मजदूर काम कर रहे हो वो अचानक बंद किया जाए, तो ये हमारे पास एक इर्रेगुलर मोमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9. The general decline in a sales of cotton cloths is attached to the component of the time series. A general decline. डिस्लाइन का क्या मतलब है? ज़वाल पजीर होना, कम होना। तो कॉटन क्लॉथ्स का जो है हमारे पास जनरल डिस्लाइन होता है, मतलब ज़वाल की तरफ आता है, उसका प्राइस जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये कौन से कंपोनेंट के साथ अटैच है? सिकुलर ट्रेंड के साथ, साइक्लिक वेरिएशंस के साथ, सीजनल वेरिएशंस के साथ, ऑल द अबाव। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सिकुलर ट्रेंड। क्यों? अब आप कहेंगे कि एक सीजनल वेरिएशन है, क्योंकि क्लॉथ्स की जो
प्राइसेस है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये सीज़न की वजह से नहीं है, ये कहते हैं कि जनरल डिक्लाइन है ये। तो जनरल डिक्लाइन जो है ये हमारे पास सेकुलर ट्रेंड की वजह से होते हैं, ठीक है। ये डिक्लाइन हो या इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जो भी हो, लेकिन जो जनरल होती है, मतलब इसने ये नहीं बताया कि यहाँ हमारे पास सीज़न चेंज हुआ है। सीज़न जो है वो वही की वही है, ठीक है। मतलब गर्मी का मौसम है, लेकिन जो क्लॉथ्स है, काटन की जो क्लॉथ्स है, वो उसकी जो प्राइसेस है वो कम होते जा रहे हैं। तो जो यह हमारे पास दो चांसेस हो सकते हैं, दो किस्म की सिचुएशंस हो सकते हैं। मतलब एक तो ये कि ये काटन के क्लॉथ जो है ये ख़राब हो ज़्यादातर, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो, इसलिए लोग जो है वो इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर और वो छोड़ लेते हैं। या वैसे जो है कोई और कपड़ा नया किस्म का आया हो और उसकी वजह से काटन का क्लॉथ जो है वो लोग पसंद नहीं करते और वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। और मौसम जो है वो गर्मी का हो लेकिन वो यूज़ नहीं करते। तो ये एक जनरल डिक्लाइन है, तो ये सेकुलर ट्रेंड की वजह से आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द सेल्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर on Dussehra and Diwali are associated with the components of a time series. अच्छा, Dussehra and Diwali, I don't know about these because these are, I think, the countries, sorry, the cities of the India, but there may be some differences between these between the situations of the Diwali and Dussehra, especially in the season. So they are called the sales of departmental store between these and these one, situated with which one component secular trend, seasonal variations, irregular variation, or all the above. So it is due to seasonal variation because in one city there may be season is different, and in the second city there is the difference between the season of these. So इसलिए हमारे पास जो है दिवाली और दशहरा के माबेन जो हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी सेल्स में डिफरेंस होगी, किसकी वजह से? सीज़न की वजह से, ठीक है। अगर हो सकता है एक जगह में गर्मी हो तो दूसरी जगह में जो है सर्दी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ cereals constitute the component of a time series, secular trend, seasonal variations, cyclic variations, all the above. So which one is the correct option? Secular trend. Why? The consistent increase तो आप जानते हैं in production of cereals constitute, cereals गल्ला को कहते हैं, अनाज को, ठीक है। कंस्टिट्यूट माना मुकर्रर करना। द कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज, अच्छा, जो कहते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंट इंक्रीज जो है इन द प्रोडक्शंस ऑफ सीरियल कंस्टिट्यूट, गल्ला की जो हमारे पास गल्ला होते हैं उसके कंपोनेंट्स का ये जो है कौन से कंपोनेंट्स से हमारे पास रिलेटेड है? तो ये एक सेक्युलर ट्रेंड के साथ हमारे पास रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंसिस्टेंट इंक्रीज जो है ये हमारे पास एक जनरल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक किसी फ्लड्स की वजह से उसमें डिफरेंस आया हो, ठीक है, या अर्थक्वेक की वजह से मतलब अनाज में जो है इंक्रीज़ हुआ हो, या जैसा कि आजकल हमारे पास पाकिस्तान में जो है इंक्रीज़ हो रहा है दिन ब दिन। ये कहते हैं कि हमारे पास जो अभी कोरोना वायरस है इसी की वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो फिर हम उसको इर्रेगुलर वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कहते हैं कंसिस्टेंट इंक्रीज़ है। तो कंसिस्टेंट इंक्रीज़ जो है ये सेकुलर ट्रेंड की वजह से हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सेकुलर ट्रेंड इज़ इंडिकेटिव ऑफ लॉन्ग टर्म वेरिएशन टुवर्ड्स इंक्रीज ओनली, डिक्रीज ओनली, एंड इधर इंक्रीज और डिक्रीज। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज क्योंकि हमारे पास इसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। क्वेश्चन नंबर 13, लीनियर ट्रेंड ऑफ अ टाइम सीरीज इंडिकेट्स टुवर्ड्स constant rate of change, constant rate of growth, change in geometric progression, all the above. So constant rate of change is the correct option. Linear trend of a time series indicates towards constant rate of change, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
Method of least squares to fit in the trend is applicable only if the trend is linear, parabolic, both A and B. In both situations, we can use the method of the least squares. Okay. Question number 15. Seasonal variations means the variations occurring within a number of years, parts of an year, parts of a month, none of the above. Seasonal variations mean variations occurring within parts of an year because there are 4 seasons in 1 year. Okay. Question number 16. Salient factors responsible for seasonal variations are weather, social customs, festivals, and all the above. So all the above is the correct option because salient factors responsible for seasonal वेरिएशन और weather also. weather की वजह से भी हमारे पास seasonal वेरिएशंस आ सकते हैं, social customs की वजह से भी आ सकते हैं और festivals की भी वजह से भी आ सकते हैं. जैसे कि हमारे मुसलमानों की जो है 2 फेस्टिवल्स है जिसको हम ईद कहते हैं. ठीक है, जो छोटा ईद होता है और बड़ा ईद होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेलिएंट फैक्टर्स जो है सीजनल ड्यूरेशन के लिए वो ये तीनों है. क्वेश्चन नंबर 17. Cyclic variations in a time series are caused by blackouts in a factory, war in a country, floods in the states, and none of the above. None of the above is the correct option because cyclic variations in time series are caused by what? Blackouts in a factory. This is an irregular or random variation. War in a country is also irregular or random. Floods in the cities is also irregular or random. So these are not. So the option D is none of the above is the correct option. Irregular variations in a time series are caused by blackouts and strikes. It's correct. Epidemics correct. Floods is correct. All the above is the correct option because इरेगुलर वेरिएशन जो है टाइम सीरीज़ में ये लैकआउट्स एंड स्ट्राइक्स की वजह से भी आ सकते हैं, एपिडेमिक्स की वजह से भी आ सकते हैं, फ्लड्स की वजह से भी आ सकते हैं. ठीक है, एपिडेमिक्स का मतलब है वबाई अमराज. ठीक है, जैसे कि कोरोना है. क्वेश्चन नंबर 19. The trend in a time series means long term regular moment, short term regular moment, long term regular moment. Option A is the correct option. Okay. The term prosperity, recession, depression, and recovery are in particularly attached to secular trend, seasonal variations, seasonal fluctuations, cyclic moments, and irregular variations. So these words are used in cyclic moments. Option C is the correct option. Dears, this is enough for today in this lecture. Inshallah, we will meet in the next lecture. So share this video with friends and also like our video and subscribe to my channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.